when the tide was not in the favor of quality and growth, when it was in the favor of, let's say, the opposite side, then all the funds started to look very similar, and perhaps performance took a bit of a backseat. And I'm not saying this question is to challenge your thought process, but as a manager of the entire house, when something that like that happens, what do you think can be like a good metric to provide the sales team or the structure or the distribution partners with an alternative? इसकी पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी चीज करते हो, क्वालिटी और ग्रोथ इन्वेस्टिंग आप करते हो और आप कहते हो वैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए, तो इट इज नॉट लिटर्ड इन द मार्केट प्लेस. यू नो, इफ यू आर फाइंडिंग दोज नेम्स लिटर्ड इन द मार्केट प्लेस, समथिंग इज रॉन्ग. ये हो सकता है कि मार्केट बहुत चीप हो, जैसे 2008 में हो गया था, और ये हो सकता है कि आपने अपनी थॉट प्रोसेस इतनी रिलैक्स रखी है कि हर कोई उसमें घुस जाता है. अच्छा. Okay, so there has to be a balance. We will get more disciplined. We will compete names better so that the better name survives. Still have enough diversification. आप देखो, मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि कोई भी नाम सेंट्रली डिसाइडेड होगा. हाँ, वो आपने बिल्कुल नहीं कहा. Portfolios will start to look similar if names are decided very, very centrally. No. Managers will decide names. Now there are 9 managers. आप हमारे 2 पोर्टफोलियो देख लो, हमारे सिमिलैरिटी बहुत कम है, ओवरलैप बहुत कम है. हर एक आदमी पोर्टफोलियो अलग तरीके से बना रहा है. अब आप सोच लो, जैसे हमने हॉस्पिटल बोला, हॉस्पिटल्स पे भी मे बी मोर पॉजिटिव. इनफैक्ट अगर आप देखो ना, हमारी 2 स्ट्रैटेजीज के बीच में भी डिफरेंशिएशन है, और अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी विद एनी अदर हाउस से कंपेयर करो ना इन द सेम स्पेस, आवर कंस्ट्रक्ट्स आर वेरी डिफरेंट. No, not only that we are in sub 30, it is focused portfolio, but construct itself is very different. So that way, for our utility to investors, focused high conviction portfolios. One, I'm talking mutual fund side, which we believe is a premium product being sold at mutual fund rates. Point one. Point two, we provide diversification versus others. So that is the use we need to be put to. Now, third, your question saying ki if you are a true follower of one style, this style won't work for all the time. You will have bad time. Yeah, sure. So the idea is that we need to communicate right. What are we doing? Okay, so क्योंकि क्या है कि at our size we need to be seen to be best at what we do. On the alternate side, my investor is a super HNI. Yeah. Yes, I am best at what I do in my mind. You would not believe that at least I am one of the best in that space. तो वो हमको allocation देने ही वाला नहीं है. And how many can a guy be good at? Okay, उसको जाके ये तो नहीं बोल सकता कि मैं value investing में भी best हूँ और growth में भी best हूँ और फलान में भी best हूँ, दिखाने. So I have to choose, which is why how I started. This is the DNA of the house. Yeah. Which is what the team can do best. If you do something which is against, तो वो बुरे टाइम पे उल्टा ही पड़ता है. वो बात सही है. तो आज के दिन अगर आप देखो तो हमारा हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो है, जो एक चीज आप देखोगे म्यूचुअल फंड साइड पे, दूसरे वर्सेस एनीबॉडी एल्स, our constructs are very different. So we bring a lot of diversification benefit. Now there is an investor who looks, if he is looking at style diversification, तो वो जाएगा, एक जैसे 2 स्टाइल होते हैं, वैल्यू का होता है, ग्रोथ का होता है. उसको लगता है कि वैल्यू अच्छा करेगी तो 60% वैल्यू में डाल दो, 40% ग्रोथ में डाल दो. उसको लगता है ग्रोथ अच्छा करेगी तो आप उल्टा कर लो. Now we want to be up there in the growth, quality growth वाला bucket. Okay, and there again running focused high concentration portfolio, which nobody else in the mutual fund space, for example, runs. Be able to do it, yeah. तो मेरे को अपना market share चाहिए. And there if you see, while our mind share is large, अगर आप market में पूछो 5 names of equity houses, chances are we will figure there. 10 names we will definitely figure there. For sure. Market share 1%, 1.5%. There is a large gap that needs to be bridged. And if we can be seen as best in what we do, which is high conviction investing, following the quality growth investing process, philosophy, QGLP framework, I think we will end up growing very strongly from where we are for a long time to come. Yeah. And that is what will serve the sales purpose very well.
हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, तो बॉस Agree. हाँ वो जो है इट विल ऑलवेज whipsaw, that doesn't work. मुश्किल है। You have to say कि हम ये करते हैं and then find investors जिनको वो चाहिए। जो आप नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स उसके बाद जो भी करोगे उसमें आप बेस्ट ही रहोगे। We really want to excel in what we are doing. So I just picked up on a word also that you use, and I'm not sure whether I heard it correctly or not. You mentioned, and this is to be seen along with idea generation. You mentioned that portfolios में वो stocks कम होंगे जो कि ज़्यादातर other portfolios of similar structure में नहीं होंगे. Did I hear that correct? You said they're not littered. Stocks are not littered. I'm not. No. What I said was high quality, Yeah. high growth at justifiable valuation kind of names are not littered in the marketplace. तो कहीं पे हाई क्वालिटी होगी, शायद ग्रोथ होगी, वैल्यूएशन नहीं होगी। Okay. कि या तो आपने अपने गेट इतने लूज रखे हैं कि सारे अंदर आ गए, और या नहीं तो मार्केट इतना खराब है जैसा कि 2008 में था कि वाकई में क्वालिटी बहुत चीप थी, क्वालिटी भी काफी चीप थी। उसका दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि आपके गेट टाइट हैं मगर जो अंदर आ रहा है वो शायद महंगा भी है, perhaps kind of reflective of what the situation is right now. And I'm not saying this in relation to your portfolios because a lot of the stocks in that space are reasonably expensive right now. So आप देखें, जब से मैं इधर आया हूँ, मैंने बहुत बारी कोशिश की कि वी आर इन दी हाई क्वालिटी स्पेस, नॉट दी हाईएस्ट क्वालिटी स्पेस। और एग्जाम्पल भी दिया है उसमें कि भाई अगर आप देखो तो जैसे कंज्यूमर एफएमसीजी की इंडेक्स है, वो 15 साल से 15% पे कंपाउंड की है, जबकि वहां पे अर्निंग्स 12 पे कंपाउंड की है, 15 ईयर्स। ओके, जबकि एक और इंडेक्स मैंने वहां पे दिखाई थी, वो आईटी की थी, जहां पे उल्टा था। ओके, सो वी सेड it does not mean कि we want to be in IT. It's just that कि this part is probably very expensive and we may be there as a risk control but not for returns. अच्छा, तो वो हमने बहुत क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश की। और अगर आप पास्ट पीरियड देखो तो देयर आर अदर एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस स्टाइल, उनकी परफॉर्मेंस और हमारी में कंप्लीट डिविएशन है बिकॉज ऑफ probably our positioning at the beginning of the period. Yeah. Where we said, see, it does not make sense to be up there in quality, जिसको बोलते quality at any price kind of investing. Yeah. We want to be where valuations make sense. So जैसे staples में हम नहीं हैं, हम discretionary में हैं, where अगर आप PE पे भी valuation लेते हो is an order lower, growth is an order higher, and in many cases quality as defined by return on invested capital may be similar to consumers. Staples. So हमने वो framework बनाया, tighten किया, and we said कि except which was the point I was making in January when COVID started to move up, we said this is a risk which is exposed, we need to cover up. So आप January के हमारे portfolio देखोगे, some managers increased staples in the portfolio. Okay, because of this. Yeah. So this is what it is. So very conscious of that. We don't want growth at any price. And आप देखो पिछले 6 महीने में how have we done versus how have other exponents of high quality investing done. And the difference is that which I am trying to make up. I think in November write up and video, December write up and video, and maybe even January. Got it. Now I'm getting the line of thought that you're explaining.